Well, we were supposed to celebrate yesterday's win at the Eden Gardens in Kolkata. We were supposed to celebrate Virat Kohli's 35th birthday and the 49th ton. We were supposed to celebrate Ravindra Jadeja picking up 5 wickets. But what we have is breaking news right now. And the breaking news is that the Sri Lankan Cricket Board has been sacked following the poor show in the ongoing ODI World Cup. The Sports Minister of Sri Lanka, Roshan Ranasinghe, has sacked the National Cricket Board. Following their poor show in the ongoing Cricket World Cup. Thank you so much for joining me on Off the Pitch with Ankit on India.com. We have with us Biswajit Jha, who is an ex-sports editor and an author. He's at the airport right now. He's in Calcutta. He was there for the match yesterday, the India versus South Africa match. And now he's taking back good, happy memories back to his hometown. We also have Sunny Dor joining us right now. And we also have Akshat. I'll start with you, Biswajit. This is big breaking news. A team has been sacked. The board has been sacked. Sri Lankan Cricket Board has been sacked, Biswajit. How do you see this happening? Surely this has never happened in the world of cricket ever before. 7 matches, 2 wins, and the board is sacked. Yeah, Sri Biswajit. Lanka performed. Yeah, Sri Lanka performed very badly, and something was coming. And I think, their sports ministry, they have sacked that entire Sri Lankan cricket board. But one question is there that is it like does this sports ministry have power to sack Sri Lankan cricket board? I don't know because this Sri Lankan these boards, these cricket boards, they are indigenous autonomous bodies. So I don't Right. know that whether they have this power to sack, but the performance was so poor that like you can expect such things because back home the audience, the entire population, entire country is so unhappy with Sri Lanka, the way they performed against India in two consecutive matches, then first in the final of Asia Cup, and then in the league stage match in India. So I think that's like something like this was about to happen, and it happened, and it can happen with Bangladesh also. We are expecting something like that from the Bangladesh Sports Ministry. Right. They Right. can Right. also sack the entire Bangladesh cricket board. But I Biswajit, don't there know is a that audio. exactly they have. Biswajit, there is an audio problem we're having. I would just like to enlighten people joining us at this point of time that Roshan Rana Singh has formed a new committee led by Arjuna Radatunga, and he'll be the interim. He'll be looking after things in a very interim position right now. And Biswajit, you were talking about, is the sports ministry allowed to take such a call? Yes, uh, Yeah, it's yeah. it's a law. They have a law, the sports law number 25 of 1973. So yes, there is a law in place. And after the humiliating loss against India, where they were bundled out for 55 runs, chasing 358, this is a decision taken by Roshan Ranasinghe, who's the sports minister of Sri Lanka. While this sounds very absurd, we are going to discuss about it right now. And I would like to ask Sunny, आपने कभी सोचा भी होगा ऐसा कुछ हो सकता है? एक पूरा क्रिकेट बोर्ड को सैक कर दिया जा रहा है. मतलब सोचो, अगर आज इंडिया 8 मैचेस में एक ही मैच जीतता कोई भी वर्ल्ड कप में कहीं भी, और बीसीसीआई को सैक कर दिया जा रहा है. बट अगेन बीसीसीआई इज एन ऑटोनोमस बॉडी, तो बीसीसीआई को सैकिंग नहीं कर सकता है हमारा सरकार. बट दिस हैज हैपेंड इन श्रीलंका. हाउ डू यू लुक एट दिस डिसीजन टेकन बाय द अंकित श्रीलंकन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री? अंकित 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 श्रीलंका की हमने फाइनेंशियल कंडीशन देखे, दैट इज नॉट वेरी गुड. इतना सब कुछ होने के बावजूद दे आर प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू देयर क्रिकेटर्स. सारी फैसिलिटीज वो प्रोवाइड करा रहे हैं, श्रीलंकन क्रिकेट को खिला रहे हैं. इससे पहले एशिया कप होस्ट करा, एशिया कप के अंदर भी कोई ज्यादा उनकी टीम ने अच्छा परफॉर्म करा नहीं. तो कहीं ना कहीं इसको लेकर देश के अंदर काफी ज्यादा, पहले भी आपने श्रीलंका का माहौल देखा था, काफी ज्यादा खराब था. तो क्रिकेट एक ऐसी चीज है, इंडिया का माहौल भी क्रिकेट ने एक टाइम पे ठीक करा था. तो कहीं ना कहीं क्रिकेट के ऊपर उनका बहुत ज्यादा फोकस था कि क्रिकेट पैसा लेके आएगा, एक क्रिकेट कहीं ना कहीं देश को चेंज करेगा. और अभी जो परफॉर्मेंस के बाद कहीं ना कहीं पूरे देश का जो मनोबल है वो काफी टूट गया होगा. जो श्रीलंका की इस टाइम वर्ल्ड कप के अंदर हालत है, आज जो मैच खेलने वाले हैं, मुझे नहीं लगता मैच होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो पोल्यूशन को देखते हुए. लेकिन इस परफॉर्मेंस के बाद अगर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंडर में आता है तो दे हैव टू टेक द हार्ड स्टेप, ताकि आने वाले टाइम पे और जो प्लेयर्स होंगे उन्हें थोड़ी सी सीख मिले. सब पाकिस्तान टीम को बोल रहे हैं कि वो बिरयानी खाने के लिए आई हो, श्रीलंका टीम क्या करने के लिए आई हो यार? यू आर एशिया कप विनर्स यार, ऐसा थोड़ा तो उन्हें भी परफॉर्म करना चाहिए था ना. इंडिया के अगेंस्ट तो कितने बुरी तरीके से आ रहे हैं, 302 रन से इंडिया से हारे हैं वो. इतनी बड़ी हार के बाद अगर तुम्हारी
गवर्नमेंट को हार्ड स्टेप नहीं लेगी तुम्हारी गवर्नमेंट, तो आने वाले टाइम पे प्लेयर्स के पास लेसन नहीं जाएगा। तो लेसन देने के लिए आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, पूरा क्रिकेट बोर्ड बैन हो गया, अब दोबारा उन्हें सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा, दोबारा सब कुछ स्टार्ट करेंगे। और श्रीलंका बहुत वीक टीम थी नहीं, जितनी वीक टीम वो इस वर्ल्ड कप के अंदर दिखी है। Right, Biswajit, this is sad, whatever has happened. But what do you think are the loopholes? Is it the domestic structure? Is it the domestic structure of Sri Lanka which is not as good as India, and they are not being able to provide or give birth to world class cricketers? ये दिक्कत कहाँ हो रहा है बिस्वजीत, आपको क्या लगता है? And Look, then I Sri come to Lanka you. is, yeah. Look, Sri Lanka has never been incomparable with India. They performed very well in 1996 World Cup. They even they were in the finals in 2011 World Cup also. But apart from that, off late they are also in transition phase. Ankit, you have to remember that they lost to quite a few players due to injury. That is also an issue for them, and they have a very young side. So I am not saying that they perform badly. There is no question about that. But they are in a team in transition. I think that their board, their sports ministry has sacked the Sri Lankan cricket board, not the entire team. So the sports ministry must have thought that their board has failed to do their duty and failed to select good team or failed to come up with a good structure, a domestic structure like this. And Ranatunga is the perfect man to lead Sri Lankan cricket board or lead Sri Lankan cricket, and he can usher in a new era. So I think that it's a step in the right direction. I don't know whether they are like ICC, these world bodies, this world cricket body, ICC and FIFA. They don't like their sports ministry and government interfering with their boards. I am telling you because this one of the Indian football Indian All India Football Federation was sacked, banned because their government Indian government interfered with some issues. So I don't know that whether how the news will be taken by this ICC and what will be their reaction. But they have taken the right direction, right step when we think about the performance of their country. And I don't think that this is such a bad step. They will have to restructure the team, and they have to do well in the future. Bad start or not, we'll find out very soon. Is this the right step or not? We'll find all that out. But Akshat, I want to find out: do you subscribe to the idea of governments? Governments of countries, taking charge of their national teams, like a cricket team or maybe a football team. Is this a good idea? Because these are administrators. You see, the guys who are there in the ministry, these guys they are administrators. Most of them they haven't played the game, and then these guys they take a call. Do you think it's the right decision? It's the step in the right direction? Akshat, what do you feel? Yeah, thank you, Ankit, for the opportunity. Ankit, see, what I think is, I mean, they should have not done this. Why? Because what I feel is, as we know that now the new members who have joined the committee, they are a judge, and they are a judge, and two more members from government side. So what I think is it's not good because they do not have experience at all, and they are not even players, no knowledge of cricket. I mean, if they are having knowledge of cricket, but still on the side of, if we see skills and techniques, that's on the zero level. But and as we all know, there has been selected a judge and members of the assemblies. They are being selected for this committee. So I think so. Without having any knowledge, you cannot put up those names, and I don't think so. That's a good decision. If they are cricket players, former cricket players, if they run, then as we see our own BCCI. If we compare that, we have cricket players on the other side, and if we compare Sri Lanka Cricket Board, so I think so that's not the good decision. While you aren't speaking, please be on mute. Sunny, I would like to ask you, can I come on the big picture over here? And I was asking, okay, thank you so much. Sunny, I would like to ask you the same question जो मैंने अभी अक्षत से पूछा. क्या ये जो सरकार का इंटरफियरेंस है क्रिकेट टीम्स या फुटबॉल टीम्स या कोई भी टीम्स के ऊपर, क्या ये सही है? बिकॉज आप समझिए ये एडमिनिस्ट्रेटर्स है, दीज आर ब्यूरोक्रेट्स.
They haven't, most of them have not played the game. तो क्या ये सही है in a way? And after this, we move to yesterday's match. So Biswajit, please be there. We have to ask you about Virat Kohli's century yesterday. Sunny, please answer this. अंकित अंकित मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ये सही है, क्योंकि तुम्हारी कंट्री की जो हालत है, तुम बहुत ज्यादा अभी कंडीशन तुम्हारी बहुत अच्छी नहीं है। बीसीसीआई इसलिए क्योंकि बीसीसीआई के पास बहुत ज्यादा पैसा है। अगर तुम टैक्स पेयर्स का मनी ले सकते हैं क्रिकेटर, तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी होगी। बीसीसीआई के अंदर टैक्स पेयर्स का मनी नहीं जाता। श्रीलंका और इंडिया को आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बीसीसीआई के पास बहुत ज्यादा पैसा है। बीसीसीआई रूल कर रहा है क्रिकेट वर्ल्ड के अंदर। श्रीलंका की हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो अभी गवर्नमेंट अगर इन्वॉल्व कर रही है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट हार्श डिसीजन लेगी, क्योंकि वो टैक्स पेयर्स का पैसा क्रिकेटर्स को दे रही है। मेरा तो ओपिनियन अंकित इसके ऊपर ये है। Right, so we got a fair idea as to what can be expected from Sri Lankan cricket. Right now, it's actually hit a rock right now, and it's going nowhere. They have taken a decision. Looks like a knee-jerk decision has been taken. In the following days, we'll find out if the decision was right or wrong. Let's now focus on the match that was played yesterday at the Eden Garden, where Virat Kohli and Ravindra Jadeja start for India, and they painted Kolkata blue. And also Rohit Sharma maintained that unbeaten streak, which was so important. We are playing a big game. The game was against South Africa. It was the fight of the equals, the battle of the equals, and the battle of the table toppers. Bispajit, when you went to the ground yesterday, I spoke to you. So you told me that you are expecting a humdinger, a close contest, a mouth-watering clash. Well, it was mouth-watering, but very much from an Indian point of view, not from a Sri Lankan point of view. So how was the atmosphere at the Eden Gardens? I want to find out, Biswajit. Building leading up to Kohli's Yeah, century, yeah. लोग क्या बातें कर रहे थे It आपके was it आसपास was के? an yeah, it was an electrifying atmosphere at the Eden Gardens, and it was a perfect match for the Indian spectators because they got everything yesterday. They got to see the record-breaking, record-catching century of Virat Kohli, and then India dominating the South African. And I told you yesterday that this is the first time we are witnessing a great Indian bowling attack, Ankit, because India scoring like Virat Kohli scoring another century is not a big thing. We have seen many centuries of Virat Kohli. We have seen many great batting performances by Indian middle order, top order, and the way Rohit Sharma started yesterday, everything was perfect. Like everything was perfect, but it was on the card. Indian batting always has been good, but the way the bowlers bowled. Ankit, I have never seen in my I have been watching cricket for 30 years almost, but I have never seen Indian bowling attack bowling so well. And all the five bowlers, I have seen two bowlers are bowling well, but two bowlers are not bowling well. Four bowlers are bowling well, one bowler is not bowling well. But what we have been witnessing here is that all the five bowlers are bowling superbly. And you can imagine a team like South Africa who has scored like 400 more than 400 score in this particular World Cup. The way they caught Van der Dusen and then Markram, Miller, and they are playing. I think this is a sublime batting attack, but against Indian bowling attack, and what I observed yesterday, like they are like machine. The way they are bowling, like Shami, Bumrah, Siraj, they are like every team is like in awe of Bumrah, and they are playing very watchfully against Bumrah. But what is happening while they are playing very watchfully to Bumrah, other bowlers like Siraj, Shami, they They are are getting picking up bowled. the wickets. Yeah, wickets. And Shami, the length he is bowling, and like wicket to wicket bowling, मुझे and ये and लगता है and yesterday शायद बिस्वजीत, एंड यू विल अग्री विथ मी बिस्वजीत, मुझे लगता है शायद रविंद्र जडेजा ने कल 5 विकेट लिया है, बट आई थिंक इट वाज शामी हैज टू गेट अ लॉट ऑफ क्रेडिट yesterday, because as the third seamer of the side, you are expected to build pressure, keep the pressure that has already been built by your meaning new they ball bowlers. So it once has your been third, relentless. It has been relentless pressure. I have never seen like the opening bowlers are bowling. Then Shami is coming. Shami is coming. There is no respite for the batsman. And then these two World Cup spinners. The way Ravindra Jadeja is bowling, the way he is like operating, the way he is bowling stump to stump. Well, like with the new DRS rule, you can't do anything. Like once you are beaten with the flight or line or length,
you are either you are plump or you are bold. Like you have no option to play against Ravindra Jadeja, and he is And bowling how was the also. विश्वजीत क्या माहौल कैसा था माहौल कैसा था Then जब it आप was बैठे it थे was an फैंस के it साथ was an माहौल कैसा था electrifying. जब Yeah, yeah. जब कोहली 80s में पहुंच गए थे 90s में पहुंच गए थे वो माहौल कैसा था ये मैं जानना चाहता हूँ Then Kohli, देखो Kohli एकदम he played a clinical knock. He knows how to play an ODI knock. My only disappointed is that in the later stages he could have scored a little faster, but that is okay with the Indian team. And when he scored that turn, it was like it was a like people were enjoying, and the Kolkata people Vishwajit, they I'll were have they. to stop you here. I have another question for you. The sources claim from Daily Mirror, the sources claim that this move taken by the sports minister of Sri Lanka has been triggered after the loss against India. So why they had to wait for the Sri Lankan team to lose against India? उसी के बाद मतलब I didn't get it. ये क्या है? They could have done it in the match before that. Why did they have to wait for the India match? Or because of the loss, the nature of the loss, 55 पे ऑल आउट हो गए थे, was that the only reason Yeah, कि it इनको it शर्म आ happened. गया? It happened two consecutive times. Last time also in the Asia Cup final, they were bowled out for 50, and this time 51. So two consecutive. देखो एक मैच को you can think that ठीक है एक मैच में हो गया, एक मैच में फ्लूक में हो गया, एक मैच में बैटिंग कोलैप्स हो गया. But when it happens two consecutive matches, they thought that there must be something wrong with the way the team has been selected. But I don't think that it will help Sri Lankan like cricket that much, because देखो प्लेयर्स तो इसमें ही चुनना है, ऐसा नहीं है जो प्लेयर्स को कोई चुन लिया और अचानक तुम्हारे डोमेस्टिक क्रिकेट में आ जाएगा चेंजेस. बट इट इज क्या होता है अंकित, ये जो प्रेशर होता है डोमेस्टिक में, मतलब जो इंटायर तुम्हारे कंट्री के जो प्रेशर होता है ना, जो खराब परफॉर्म करता है, तो गवर्नमेंट देखो गवर्नमेंट तो पॉपुलर डिसीजन लेते हैं. इन डेमोक्रेसी यू हैव टू टेक पॉपुलर डिसीजन, बिकॉज तुमको वोट में जीतना है. तो क्या होता है ना, गवर्नमेंट ये पॉपुलर डिसीजन ले लेता है इस टाइम, क्योंकि फिर जो जो देश के लोग को लगता है नहीं नहीं हमारे सरकार ने स्टेप लिया है. बट सरकार भी जानता है कि इससे ऐसा नहीं है कि कल श्रीलंकन क्रिकेट में एकदम चेंजेस आ रेडिकल जाएगा. चेंजेस होंगे. रेडिकल ये सब ये पॉपुलर डिसीजन होता है. ये डिसीजन डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में लोग फिर गवर्नमेंट को क्वेश्चन करने लगता है कि क्या हो गया हमारा कंट्री ऐसा, क्योंकि जनरल लोगों को पता नहीं है कि ये जो बोर्ड्स है, बोर्ड्स और गवर्नमेंट एक नहीं है. इसको हम लोग को भी समझना चाहिए. बहुत लोगों को समझ नहीं है, जब बोर्ड एक ऑटोनोमस बॉडी होता है और कंट्री का एक दूसरे हिसाब होता है. तो बोर्ड्स जो होता है, जो बोर्ड्स के ऊपर ऐसा, आप आइडियली कल कल श्रीलंका बोर्ड हो सकता है. आई डोंट नो how much like independent their judicial system is. बट इंडिया में ऐसा होता है, तो इंडिया में कोई सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, तो प्रोबेबली ये होगा जे कल हो सकता है जो वो मतलब ये राइट डिसीजन राइट भी राइट चेंज हो राइट जाए. राइट 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 विश्वजीत. हाँ इस हिसाब से तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कब का सैक कर दिया चाहिए होता. आई मीन दे शुड हैव सैक द पाकिस्तान क्रिकेट नहीं, बोर्ड विद पाकिस्तान द काइंड स्टिल ऑफ इन हैंड. परफॉर्मेंस दे आर पुटिंग अप. पाकिस्तान स्टिल इन हैंड, अंकित, डोंट फॉरगेट Okay, इट. at this point of time, thank you so much, viewers, joining us at this point of time on Off the Pitch with Ankit. We were touching 800 viewers real time. Thank you so much for all your love, support. At right now, we have still have about 500 viewers joining us currently. Please show your support. That will also motivate us to grow. And thank you for sharing all your love with us. If you have anything, if you have any suggestion, there is the comment section over there. Please go over there and suggest us if you want us to make some changes to our template over here. You can please surely go and suggest. What is the Thank you so what is much, the please. what is the what is the opinion of our audience? Like who will win this World Cup? They think that apart from apart from India, any team have a chance. So No other team has any chance. no, I Till want yesterday, an Biswajit, opinion. till yesterday, Biswajit, I thought that South Africa still have a chance. But now I feel after yesterday's annihilation from India, I think South Africa they do any. I mean, forget about South Africa. I don't think any team stands a chance. Well, guys, But I I just want want to. to let you guys know that Sunny कल ऑफिस आया था. It was his off. सनी ऑफिस आया था और उसने केक भी लाया था
और हर साल के जैसे सनी ने कल भी ऑफिस में केक काटा because it was Virat Kohli's birthday. I'm sure you guys watched us on DNA and India.com yesterday. We were going live while Kohli was nearing his 49th ton. सनी कैसा रहता है, कैसा लग रहा है आपको? कोहली ने वो जो मंकी ऑन हिज बैक था उसको हटा दिया है, वो बंदर को हटा दिया है पीछे से. अंकित नाउ ही हैज अंकित अ फ्री सबसे माइंड. अंकित सबसे पहली चीज तो ये है, लोग बोल रहे थे कोहली बहुत ज्यादा स्लो खेल रहा है, विश्वजीत सर ने भी यही बोला कि कोहली बहुत ज्यादा स्लो खेल रहा है. आज ये सुबह मैं इस बात ट्रेंड से भी कर रहा था हैशटैग सेल्फिश. मैं इस बात से सहमत एकदम नहीं हूँ. अगर कोहली स्लो नहीं खेलता तो साउथ अफ्रीका की तरह हमारे भी जल्दी जल्दी विकेट्स हो जाते, क्योंकि बॉल कुछ ना कुछ तो देखो ग्राउंड के ऊपर कुछ ना कुछ तो बॉल का मूवमेंट था. कोहली ने खुद कहा द पिच वाज ट्रिकी, द बॉल वाज कमिंग ऑन टू द बैट स्लोली, एग्जैक्टली इट वाज एग्जैक्टली डबल कोहली पेस. स्पिन. यस. तो कोहली का सब नॉक को स्लो बोल रहे थे, बट इट वाज नॉट अ स्लो नॉक. जो हमारा स्कोर था वो स्कोर अच्छा खासा था. ईडन गार्डन्स को हम पुराने वाले ईडन गार्डन्स की तरह देख रहे थे कि 380 से 400 रन जाएंगे. और रोहित शर्मा आते हैं ना ओपनिंग पे, तो रोहित शर्मा बैटिंग को इतना इजी कर देते हैं, ऐसा लगता है कि ये बैटिंग पे कुछ नहीं है. बॉस किसी भी और बॉल पे तुम कल छक्का कल चौका तो मार सनी सकते हो. कैसा हुआ था, एंड अक्षत विल अग्री विथ मी. अक्षत कल ऐसा हुआ था, साउथ अफ्रीका डिड नॉट नो व्हाट हिट देम इन द फर्स्ट 5 overs. Rohit Sharma went हाँ. ballistic. Rohit Sharma, he hit the roof. I mean, he was playing all kinds of shots and all were going over the boundary. I mean, a तो kind of रोहित Rohit Sharma you have not seen very often. The roof we saw तो Rohit Sharma अंकित in yesterday. अंकित रोहित शर्मा बैटिंग को इतना इजी बना देते हैं, वहां पे जाने का तुम्हें भी ऐसा रहेगा रोहित शर्मा जैसे छक्के मारा इस पिच पे तो शायद मैं भी रन बना के आ जाऊंगा. No, वो Exactly, it चीजें was बस. it exactly. was it was a strategy, Ankit. It was a strategy by Rohit Sharma, and he is playing a sacrificial role here. You Right, right, remember right. this, and the way he could have scored 2 3 tons in this World Cup, but he is sacrificing for the team because he is It's giving his a designated role. destroying start. Yeah, he has taken a dedicated role, and he is sacrificing a lot. He is sacrificing his centuries. Because later on I agree बट with that the विश्वजीत ball was coming. बट Look, विश्वजीत Sunny, look, one thing I just told that at the later part, when after 45 overs it was a slow batting. You because you are a fan will always see something, no. But I am a cricket journalist. I will see like this only, because I don't I am not telling that when he played a Okay, even perfect if shot he was, till. okay, hypothetically, Biswajit and Sunny, even if he was being selfish, why wouldn't he be selfish? It's a World Cup turn. It's on his birthday at the iconic Eden Garden. If he takes I am couple of extra balls, I why I shouldn't am he? No, I am not telling that he is selfish, because he has Of proved course that he's not. Of course he's not. no, he is not a selfish. I am telling that he could have could have played a little bit faster. I am not No, telling that Biswajit, he the is pitch और was selfish. अंकित tricky. Please अंकित understand, the pitch was tricky. No, Kohli no, no, told no. about अंकित this that the pitch No, was the pitch tricky. अंकित was अंकित tricky. अंकित Pitch एंड was tricky. विश्वजीत. But look. Jadeja also played on that particular pitch. Rohit Sharma also played on that particular pitch, and विश्वजीत विश्वजीत यू Jadeja आर at the सेइंग. end. I was expecting a little faster लोग क्या innings बोल रहे थे, when लोग क्या बोल रहे थे, आपके आसपास जो look, बैठे थे वो क्या no, no, बोल रहे थे? because people are very happy in this country. Our country is a country of worshipping the heroes. So there is no fact. People are very happy that Kohli scored a run. I am also happy. My son is also happy, and my wife was also happy. Everyone around me was happy. But the अच्छा. problem is that as a journalist, I felt that last 2 3 overs he could have or should have played a little faster. I'm not saying that he is selfish, because he has played enough game from India. He has won many matches for our teams. So this is there is no denying the fact that he played a very good knock. It was a clinical knock, and for his knock, India reached 223-26. There is no denying the fact, but he could have played, and I Right, don't right, know. right. Maybe, Yeah. maybe, अच्छा, maybe. आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग. अभी आप बोल रहे थे कि रोहित बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है अपनी बैटिंग को लेकर. अगर मैं टीम का कैप्टन हूँ, मुझे बैटिंग को सेक्रीफाइस करके मैं इंडिया को वर्ल्ड कप दिलवा रहा हूँ, तो मेरी ऐसी 100 सेंचुरीज भी है, मैं उन्हें छोड़ के, मुझे पता है मेरे ठीक लास्ट है. वर्ल्ड कप हो सकता है, तो मैं या सेक्रीफाइस करके वर्ल्ड कप के लिए दिस जाऊंगा. इज मुझे पूरी दिस इज टीम को देना है, ये कैप्टनसी की स्पिरिट होनी चाहिए. नहीं, तो वही शायद हम मैं इसलिए बोल मैच नहीं 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 जीत पा रहे हैं. नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ तो कि एक वो स्पिरिट है.
वो स्पिरिट उसमें है और होना भी चाहिए। और देखो 3 गेम है, एट द विश्वजीत एंड ऑफ 10 द डे सेंचुरी कोई कोई एग्जैक्टली। सेंचुरी करके भी टीम हार जाए ना, उस सेंचुरी के कोई मायने नहीं एग्जैक्टली रखता है। अरे 10 विश्वजीत, सेंचुरी की इंडिया जगह। ऑलरेडी, सनी विश्वजीत, इंडिया ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका था। कोहली क्यों ना दो एक्स्ट्रा बॉल ले। नहीं नहीं, सही वो बात है। वो न्याय अगर भी, कल भी शतक नहीं मारता ना, हम आज यही डिस्कस करते कब आएगा ना कोहली का भी 49 शतक। ना भी आपको भी पता मतलब है सनी, उसको हम यही वो डिस्कस दो करते हैं। मतलब, हाँ वो सेंचुरी तो कल होता ही कोहली का, ऐसा नहीं है कि कोहली थोड़ा मार देगा तो वो सेंचुरी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। कोहली को लेके नहीं नहीं, कोहली मतलब विश्वजीत मैंने, 2 सेंचुरीज ऑलरेडी मिस कर चुका है इस टूर्नामेंट में। 3। 3, राइट, 3 सनी, राइट। So yes, I mean, if he took a couple of extra balls also, it's okay. Eventually, we won the match. ये फाइनल तो था नहीं, ये सेमीफाइनल तो था नहीं। आई वुड लाइक टू आस्क अक्षत, अक्षत who has got 83 in the match we played last week. He's been in very good form. Akshat, I want to know from you, Akshat, what according to you was the hallmark of Virat Kohli's innings yesterday? Yeah, Ankit, see, what I see is generally if we talk about, Virat Kohli, the player, the icon, I mean, the best right-handed batter of the team, and watching the hallmark, see, when I talk about, social media aspects, first of all, people are trolling him according to his selfishness and all stuff. And I would tell that there was no selfishness. And coming up to this milestone, I mean, leveling up with legend cricketer Sachin Tendulkar. As we all know, in the in the conference, he told that I mean, he's happy that he's together with his hero. That's the best achievement of his life, I think so. And for surely, we all know that Sachin Tendulkar also tweeted on that that yes, he because after that thing, how the most happiest person I think so is Sachin Tendulkar after watching that, because what he was thinking that the record must be equalized or being broken only by an Indian, only by an Indian, and that's what Virat Kohli did. Well, I appreciate his shots, the playing weight, the style, the batting, the touch on the ground. The as he threads the ball to the covers, which were fantastic, Ankit. Literally, I enjoyed his innings a lot, and watching him, even I do play cricket like that, but still, I would. I've got one funny question for Sunny, and I think then we'll wrap up. पता नहीं इसके बाद चला सकते हैं कि Sure. नहीं। This is Nakul Chaturvedi. He has a question. क्या कल ऐसा हो सकता है कि साउथ अफ्रीका बोर्ड भी CSA क्रिकेट साउथ अफ्रीका को सैक कर दे? क्या ऐसा हो सकता है ऐसा इंडिया के साथ ये देखो देखो, शर्मनाक हार के बाद? नहीं नहीं नहीं, साउथ अफ्रीका ने ऐसी बहुत सारी हारों का सामना करा है, इससे पहले ही सैक हो जाते हो। नेदरलैंड से भी एक मैच वो हार गए हैं, उन्हें सैक होना था तब हो जाते। इंडिया बड़ी टीम है, उन्हें भी पता है इंडिया वर्ल्ड कप लेके जा रही है, तो इतना तो नहीं होने वाला। श्रीलंका और सैक हुई है क्योंकि वो इंडिया से 2 मैच पाकिस्तान, आ इन रही है। लोगों का क्या सीन है? पाकिस्तान, पीसीबी पाकिस्तान को तो तो दुबई सैक ही कर जाएगा। दो और जाका पाकिस्तान तो अशरफ को दुबई जाएगा। रिटायर कर दो। पाकिस्तान तो दुबई जाएगा। जाका अशरफ की तबीयत खराब होगी, तो तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें लगेगा कि अब मैं जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता, एक ट्वीट करके वो बोल देंगे अब मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो सैक होंगे सोफिस्टिकेटेडली, वो ऐसे सैक नहीं होंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जाएंगे वर्ल्ड साहब, कप के लेकिन बाद हर टीम क्या क्या चेंजेस बदलाव करते हैं, बिकॉज काफी सारे बदलाव होने वाला है वर्ल्ड कप के बाद। आई एम इंग्लैंड हंड्रेड के अंदर परसेंट सबसे श्योर बड़ा अबाउट बदलाव दिस। देखने के लिए मिलेगा अंकित। सबसे बड़ा बदलाव इंग्लैंड के अंदर देखने के लिए मिलेगा। इंग्लैंड इज नॉट इवन प्रोबेबली गोइंग टू मेक इट टू द चैंपियंस ट्रॉफी यार। चैंपियंस इससे ट्रॉफी तो ज्यादा सबसे बड़ा शर्मनाक बदलाव क्या हो वहां मिलेगा। सकता है? अक्षर, तुमने सबसे कभी बड़ा सोचा बदलाव था वहां एक दो देखने को साल मिलेगा। पहले, पिछले साल जब इन लोगों ने वर्ल्ड कप जीता था, आपको लगा था कि ऐसा हो सकता है? कि अब मुझे तो लगा दीज गाइस दे आर वाइट बॉल गॉड्स, ये लोग वाइट बॉल के भगवान है। देखिए अंकित, मैं यही चीज कहूंगा। मैं लिटरली बताऊं, मैंने जब जब मेरे जो कजिन्स वगैरह होते हैं, माय फ्रेंड सर्कल, व्हेन आई आस्क देम कि यार इस बार वर्ल्ड कप का क्या सीन होने वाला है, व्हिच टीम दे आर गोना सी स्ट्रॉन्गेस्ट, दे वर लाइक इंग्लैंड। भाई इंग्लैंड इंग्लैंड के 11 11 के 11 बैटिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं भाई, बहुत तगड़ी टीम है। 2019 का वर्ल्ड कप तुझे याद नहीं है क्या? भाई बहुत तगड़ी टीम है, व्हाइट बॉल में ऐसे मार दे भाई। बेन स्टोक्स वापस रिटायरमेंट से वापस बाहर आ गया भाई, बहुत मारेगा अब की बार इंडिया को, ये वो। और उसके बाद भी प्रेडिक्शंस आए थे कि भाई इंग्लैंड के पास अब कुछ होने को है नहीं, भाई इंडिया को तोड़ेगा इंग्लैंड, बहुत क्या बोलते हैं, बहुत ऐसी हालत होने वाली है दैट मैं आई मीन लिटरली आफ्टर वॉचिंग दो स्टफ, मैं खुद यही कहूंगा कि ये क्या हो गया इंग्लैंड को। आई डिड नॉट बिलीव दैट दिस इज इंडियन क्रिकेट। आई मीन जैसा कि इतिहास हम देखते हैं अंकित, इंग्लैंड जैसी रही है, और
आज जैसा हम देख रहे हैं इंग्लैंड को, ये बहुत अलग है, अपोजिट है पूरा, बहुत ही अलग है। बिकॉज हमने इंग्लैंड के इतने हॉल ऑफ फेम क्रिकेटर्स है, इंग्लैंड रनर अप रही है काफी बार, हार्ड लक एक ही वर्ल्ड कप आया बट रनर अप भी रही है, फाइनल्स में आई है, बहुत हार्ड ट्राई किया है, बहुत अच्छा खेली भी है, कुछ गलतियों की वजह से पीछे भी है, लेकिन इस बार का सीन मुझे कुछ अलग ही लग रहा है अंकित, कुछ आई मीन नॉट इवन ऑन द बॉलिंग साइड, नॉट इवन ऑन द बैटिंग साइड, व्हाट टू कंपेयर आई डोंट नो। बिकॉज आई थॉट दैट इंग्लैंड एटलीस्ट टॉप फोर में तो आ ही जाती है, और मैं तो प्रेडिक्शन भी कर रहा था कि फाइनल इंडिया वर्सेस क्रिकेट के इंग्लैंड होगा। अक्षत बट अक्षत राइट, क्रिकेट के इन्वेंटर्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में स्ट्रगल कर रहे हैं। जिन्होंने क्रिकेट को बिल्कुल निकाला वो बिल्कुल क्रिकेट वर्ल्ड कप में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि इंग्लैंड की ये टीम बचेगी। कोच वगैरह, स्टाफ वगैरह, काफी सारे चेंजेस हमें इंग्लैंड में देखने के लिए 110% मिलेंगे, क्योंकि इंग्लैंड इस गेम बिल्कुल को लेकर इतना ज्यादा डोमिनेटिंग है। अगर कोई और कंट्री उनके यहाँ पे जाकर कोई रिकॉर्ड बनाता है ना किसी और कंट्री का प्लेयर, तो वो इस प्लेयर को इतना ज्यादा स्लेच करते हैं, इतने ज्यादा माइंड गेम्स खेलते हैं कि वो प्लेयर अनफॉर्म्ड ही हो जाए। वो प्लेयर, काफी बार ऐसा हुआ है कि इंडियन प्लेयर्स को फील्ड छोड़ के जाना पड़ा। एक बार मुझे याद है KL राहुल सेंचुरी मारी इंग्लैंड के अंदर, जो फैंस थे वो KL राहुल के ऊपर ना बॉटल की जो कॉर्क होती है कॉर्क फेंकने लगे थे, सिराज Just को स्लेच imagine. करने लगे थे, सिराज ने विकेट लिया था। तो वो टीम अगर इतना गंदा परफॉर्म करके जा रही है, वहां के फैंस तो मुझे लगता नहीं है कि इंग्लैंड क्रिकेटर्स को जीने देंगे। तो काफी सारे चेंजेस इंग्लैंड क्रिकेट में देखने के लिए 100% मिलने वाले हैं। While it is pretty disappointing as to what has happened with England, it is more disappointing as to what has happened with Sri Lanka, the Sri Lankan board. In this session, after 30 odd minutes, we have figured out what lies ahead for Sri Lankan cricket. We at least got a fair idea from our panelists. And we also spoke about the match that took place at the Eden Gardens in Kolkata yesterday and how Virat Kohli and Ravindra Jadeja painted the city blue. With the World Cup really heating up, we have some real good games to look out for in the upcoming days. Thank you so much for joining us on Off the Pitch with Ankit on India.com. Thank you so much. Stay tuned to this website for all the latest across sports. Thank you. थैंक यू अंकित।